So, finally, West Ham 3, Chelsea 2. Welcome back to the Football Parliament, your one stop destination for all your football debates, discussions, and opinions. Chelsea played West Ham in the London Derby, and it definitely was the London Derby. This is what Premier League brings to you. Christmas period, Chelsea were lethargic. What should I say? After the Watford game, definitely we did not deserve to get all 3 points from that Watford की game. हमें यहाँ पे भी सेम लेथार्जी दिखी. Injuries again were hurting Chelsea. So let's start the video with the lineups first. Obviously, Chelsea went with the traditional formation 3-4-3. West Ham were also marking them with the same formation, a 3-4-3. But definitely Christmas period आ गया है and both the teams were suffering. दोनों teams को वो lethargy दिखी. I'll say दोनों teams बहुत थकी हुई थी. They had players getting injured. Both the teams, West Ham के लिए एक player ज़्यादा injured हुआ लेकिन Chelsea में नहीं था वो. And it was a complete I won't say dominant performance by both the teams, but a perfect game, I'll say, for both the teams. First of all, I'll start with Chelsea. Chelsea obviously started Mendy in goal. Then we had a back three of Rudiger, Christensen, and Thiago Silva. We missed, I'll say, Trevor Chalobah. कह सकते हैं because we were not that active backline में. Thiago Silva, first of all, age is just a number. हमने मैच हारा, but that guy is something different. 1 मिनट पहले तुम जाके अभी एक कॉर्नर पे गोल मार के आए हो एंड देन वेरी नेक्स्ट मिनट तुमने एक गोल लाइन क्लियरेंस करा है. दैट इज जस्ट द सेकंड गोल लाइन क्लियरेंस 2 हफ्ते में दैट दिस गाय हैज डन. कौन मानेगा ही इज 37 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ. सो आई रियली डोंट नो अब उसके बारे में. नेक्स्ट मूविंग ऑन, आई विल से चेल्सी की मिडफील्ड वाज रूबन लॉफ्टस-चीक एंड जॉर्जिनियो. डेफिनेटली जॉर्जिनियो के आने के बाद से वी गॉट दैट कंट्रोल इन द मिडफील्ड. चेल्सी वर प्लेइंग वेरी वेल इन द मिडफील्ड एज कम्पेयर टू द वॉटफोर्ड गेम. फर्स्ट हाफ वॉटफोर्ड का वॉज वेरी वेरी बैड, बट इधर हमें कंट्रोल मिला जॉर्जिनियो के आने से. नाउ मूविंग ऑन टू द अदर पोजिशंस, द विंग बैक पोजिशंस, मार्कोस अलोंसो एंड रीस जेम्स. मुझे नहीं पता वाई मार्कोस अलोंसो स्टार्ट्स एवरी गेम फॉर चेल्सी नाउ. मुझे नहीं कॉन्फिडेंस आता मार्कोस अलोंसो के साथ. आई जस्ट से दिस क्योंकि इफ़ यू सी द सेकंड गोल जो हमने कंसीड करा, दैट इज वॉज फ्रॉम द लेफ्ट साइड. हमारे विंग बैक को उस टाइम पे रन बैक करना चाहिए था. इट वॉज नॉट हिज मिस्टेक आई से, बिकॉज रूडिगर एक क्लियर करना चाहता था बॉल को, बट वो क्लियर नहीं कर पाया एंड दैट इज़ व्हेन वी एक्चुअली कंसीडर्ड द गोल. एंड ब्रिलियंट फिनिश बाय बोवेन. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट गोल ऑफ वेस्ट हैम एज वेल. वेस्ट हैम का फर्स्ट गोल केम थ्रू अ पेनल्टी जो जॉर्जिनियो ने मिस्टेक करी. मेंडी ट्राइड टू कैपिटलाइज इट बट इवेंचुअली ही गेव अवे द पेनल्टी एंड चेल्सी कंसीडर्ड दैट गोल लैंजिनी के थ्रू. सो आई रियली डोंट नो, दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग बिकॉज चेल्सी जो एक टीम वी वर फैंस वर हाइपिंग कि हम वी कैन रिपीट द मोरिनियो का फर्स्ट सीजन कंसीडिंग द लीस्ट गोल्स इन द लीग, बट what have we done? Just conceded 3 goals in the same match. This is the third time we have conceded 2 or more goals जब से टूकल आया, and that is like 10 months का play. That is an incredible record, but definitely not the record Chelsea fans जो सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं. Chelsea's second goal came through a good play, I'll say. Ziyech ने बॉल डाला माउंट को एंड माउंट स्कोर्ड ब्यूटिफुली. द फिनिश वाज जस्ट क्लास. डायरेक्ट वॉली पे लेना उस शॉट को एंड हिटिंग दैट इन द कॉर्नर वाज समथिंग एल्स आई विल से, बिकॉज कोई और प्लेयर नहीं कर पाता उस टाइम पे, बट वाज अ वेरी गुड गोल. बट एक चीज़ हमें याद रखनी है, उसी प्ले में जॉनसन गॉट इंजर्ड एंड वो मार्क नहीं कर पाया था माउंट को, जिसको फिर स्पेस मिला, जिसको टाइम मिला टू गेट हिज शॉट एंड ही स्कोर्ड. दैट वाज जस्ट अबाउट द मोमेंट. हाफ टाइम पर काई हैवर्ट्ज गॉट इंजर्ड. He was he was subbed off. Lukaku was brought on, but what did Lukaku do? इस गेम में मुझे लुकाकू का प्रेजेंस नहीं दिखा. लुकाकू was just in the team to fill that number 9 का रोल. उसका कोई लिंक अप प्ले नहीं था. लिंक अप ही वाज डूइंग लिंक अप, लेकिन स्टिल उसका कोई एक मेजर रोल नहीं था जो उसको करना चाहिए था. वही जो हमारी प्रॉब्लम्स थी पहले लुकाकू के इंजर्ड होने से पहले, कि लुकाकू वाज नॉट फिटिंग इनटू द सिस्टम. Tuchel has to work on that. एंटोनियो कॉन्टे ने कहा था that Chelsea have one of the best strikers in the world Lukaku के फॉर्म में, but they have not yet seen or utilized the best of Lukaku. So how do we utilize the best of Lukaku? हमें नहीं पता. And then 87th minute to be exact, what did Masuaku do? Masuaku came as a sub when Johnson got injured, and that was a blessing in disguise for them because Masuaku की strength was very hefty for Chelsea wingers. उसको वो बीट नहीं कर पा रहे थे. They had to use Reece James. Obviously, I'm talking about Reece James. He had a very good game again, despite the coming back from injury. He had a very good game, but still,
मासुआकू ने वो शॉट लिया एंड दैट वाज व्हाट वाज दैट लाइक, उसको भी बिलीव नहीं होगा उसने वो गोल मारा. मेंडी वाज कॉट सरप्राइज्ड बाय दैट शॉट. उसने लेफ्ट वो जा चुका था अपने बट ही हैड टू डाइव एट द राइट टू द राइट लास्ट मोमेंट पे एंड इट वाज अ गोल. लाइक आई डोंट नो the crazy starter that Chelsea has to play 9 games in a spell of 29 days, if I am not wrong. 7 games or 9 games. Second game it was after the Watford game, and we were like lacking that intensity. Obviously, when you have to play every 3 days, Saturday afternoon ki game, it is a cursed game. We all know for big teams ki Saturday afternoon में you lose those matches. And Chelsea ने वो आज दिखा दिया. Why? Because हमारे पास नहीं थी वो प्रिसीजन, नहीं थी अटैक में. वी वर नॉट दैट डायनामिक, इफ डायनामिक इज द राइट वर्ड, attacking third maybe or midfield maybe to do things very quickly or at a rapid rate, I'll say. So obviously things were different for Chelsea. ठीक था game. Yes, Chelsea lost those points and by the time we upload this video मुझे अभी स्कोर नहीं पता मैन सिटी और लिवरपूल गेम्स के. सो इट माइट हैपन कि चेल्सी माइट नॉट बी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल. इन फैक्ट वी माइट स्लिप टू थर्ड पोजिशन. दिस इज रियली रियली concerning या फिर bizarre to think of it, because we have just lost 2 games in the whole league, 15 matches and just 2 losses, and we are not even we are not sitting on the top of the table. This is the competition what Premier League brings you. This is what Chelsea has to deal with. हमें चाहिए वो कोवाचिच वापस आए. मिडफील्ड आई न्यू गेम स्टार्ट होने से पहले ही मिडफील्ड विल बी एन इशू. जॉर्जिनियो हाफ फिट था इस मैच के लिए, रूबन लॉफ्टस-चीक था, लेकिन स्टिल गोइंग अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ राइस एंड सूचेक, those guys are like on different level. Rice, as everyone on Twitter was saying कि अपना चेल्सी का ऑडिशन दे रहा था, and how well did he do that? When they had their second centre back injured, Suchek went on to the back. He tried to be the centre back. Declan Rice was coming from the covering for the third centre back, and they did that brilliantly. They were not taking any shits for sake of their lives. Like very good game by West Ham. मुझे ये वाइब्स देता है दैट लांजीनी गोल 3-2 स्पर्स जो उन्होंने पिछले सीजन करा था, लेकिन दैट वाज समथिंग डिफरेंट. वेस्ट हैम डिड अ वेरी गुड मिराकल उस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे गोइंग डाउन टू द चैंपियंस और द पोटेंशियल चैंपियंस, द लीडर्स ऑफ द लीग, तुम उनके 2 गोल्स 2 बारी तुम डाउन गए हो एंड यू बाउंस बैक बोथ द टाइम्स एंड लेटर स्कोर द विनर. दैट इज व्हाट अ टाइटल कंटेंडर डज. लाइक वेस्ट हैम ने आर सिटिंग इन द फोर्थ पोजिशन एंड दे डेफिनेटली डिजर्व दैट. Obviously fourth position is what they should be at. They are competing. They gave a game जो एक first versus fourth वाली vibe देता है. So definitely a good game, but Chelsea now needs rest. Players need rest. Tuchel को भी अब I think so एक rest चाहिए, because today Tuchel was not at his best. उसको अपने best potential नहीं दिखा. West Ham is a very good team. This is not an upset, I'll say, because उनका third player was Saeed Benrahma, third substitution. This shows the quality that West Ham side also has now. Like Benrahma coming on for in the 80th minute or in the later half of the match. Obviously, you have that quality and you deserve to go for the win. They deserved it. An off day for Chelsea, I'll say, but we need to bounce back क्योंकि अब title slip हो जाएगा. You are getting into that Christmas period. You need to learn कि अब matches नहीं छोड़ने. If you can survive this phase, then only you can call yourself the contenders for the Premier League title. So definitely we have to survive this. Man City, Liverpool, I hope they lose their points. Chelsea को कुछ at least एक cushion मिले कि we can survive this phase and stay in that top 2, top 3 positions कि हम at least अपना stake claim करके रखें. This is from me, the raw reaction of a Chelsea fan. Thank you so much.